ओके प्यारे बच्चों, आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव और एडिशन integer or subtraction of integer, so we are going to solve exercise number 1.2. okay, so properties just we overlook, that is a closure property. A plus b gives integer, or a minus b, that is subtraction property, gives integer, then it is a closure property. Then कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, दैट इज अ रिवर्स आपको उनका प्लेस करना है. ओके, एंड इन सब्सट्रैक्शन देयर इज नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, but in subtraction it is not following the associative property. Then inverse identity, if you are having integer and you are going to add its reverse, that is a inverse, so total will be a 0. Inverse total will be 0. A plus minus a gives 0. And last one, additive identity, if you anything added to integer, that is any 0 is added to any integer, it gives same number or same integer. okay, similarly you can subtract 0 from any number, you will get the same number here. okay, by using this property we are going to solve this exercise number 1.2. so question 1, fill in the blanks and write the name of the property used in each case. okay, first one, that is a first, minus 16 plus minus 5 is equal to minus 5. okay, so this is the changing their position, ये क्या आपस में उनकी जगह चेंज कर रही है. तो इसमें जगह चेंज करने वाला प्रॉपर्टी कौन सा है हमारा? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, cumulative property, that is a plus b is equal to b plus a. so this is minus 5. तो जो प्रॉपर्टी में a है, we can write here in bracket minus 16. okay, and the property used is commutative property. okay, first case में commutative property use किया. okay, so here b minus 561 plus dash is equal to minus 561. okay, so the number is remaining same, the integer is remaining same. तो ऐसा कौन सा चीज ऐड करने से नंबर सेम हुआ है? तो यहाँ पे हमारा एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी थी वो फॉलो होता है. तो यहाँ पे minus 561 plus 0 you will get same integer. so this property is called additive identity additive. okay, now see minus 3 in bracket minus 4 plus minus 7 is equal to, so here it is again bracket minus 3 plus minus 4 bracket complete, and you have to write the subs. so this is based on 3 integer a b c and having plus sign, so this is addition, and this come under associative property. okay, associative, a plus bracket b plus c is equal to a plus b in bracket plus c. so here same, so a plus in bracket b plus c, you can say here a, this is b and c, here you get a, b and c. so c is the same as it is minus 7. so this is which property? Associative property. okay, किसकी associative? तो this is addition, it is addition, these are the addition. okay, and last one, minus 18 plus minus 4 is equal to nothing is given. okay, so if अगर कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट जस्ट जो भी सब्सट्रैक्शन या एडिशन है वो लिखना है आपको, दैट इज minus 18 एडिशन minus 4. तो minus 18 में minus 4 ऐड करेंगे, you will get, add this both and write common sign, so you will get the minus 22. okay, minus 22, and addition of a plus b gives an integer, that is called as a closure property. ये कौन सा आएगा? closure property. okay, so this is a question number 1.
Next, question number 2. Okay, question number 2. For A is equal to -12, B is equal to 4 and C is equal to -25. Find the whether following properties. कुछ property दिए गए, आपको उसको solve करके बताना है. They are tally with each other or this property obey. Okay, so in this first, A plus B is equal to B plus A. So this property is, yes, this is a commutative property. Okay, let us consider this two. It is called लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये राइट हैंड साइड है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो ये दोनों मैच होना चाहिए. सो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b इज इक्वल टू, use the value a what it is a -12, b is what 4. So is equal to -12 plus 4. So this is the addition of two integers. One is a negative integer, one is a positive integer. So simply take a difference. आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है और जो साइन बड़ा है उसका साइन देना है. ओके, सो हियर 12 minus 4, यस 8, और साइन किसका आएगा, 12 का आएगा क्योंकि 12 बड़ा होता है 4 से. 12 is greater than 4. Okay, now this is your left hand side. Now b plus a is equal to b plus a. What is b? B is 4. Okay, 4 plus what is a? A is a -12. Okay, is equal to, so b plus a, 4 plus -12. Again the addition of positive integer and negative integer. तो क्या करना है, just simply take a difference between them and write number of sign of that bigger number. So 12 minus 4, 12 minus 4 is again 8, sign for, yes, -8. So therefore a plus b is equal to 8, which is equal to b plus a, and therefore a plus b is equal to b plus a. It is satisfying. Okay, so यहाँ पे ये satisfy होता है. Okay, question number 2, second part in this, a plus b plus c bracket is equal to bracket a plus b plus c. So this property is associative property. Yes, whether it is tally or not we have to show by using this value. Okay, तो इसमें क्या करेंगे हम शुरू में, let us consider this is left hand side and this is right hand side. Okay, और ये दोनों को हमको सेम बताना है. Okay, so here first left hand side is a plus bracket b plus c. Okay, is equal to a's value -12 plus bracket b value 4 plus c value, so here bracket -25 bracket complete. We are changing this bracket as another bracket. Okay, okay, solve this. Is equal to -12 plus as it is. Now solve this bracket. This is addition of negative integer and positive integer. In this situation you have to take simply difference. Okay, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का जब भी एडिशन आएगा दोनों का डिफरेंस लेना है और साइन किसका देना है, सो लार्जर द ग्रेटर द नंबर उसका साइन देंगे. ओके, सो 25 minus 4, यस इट बिकम 21, और साइन किसका प्लस या माइनस, सो इट इज अ माइनस बिकॉज 25 ग्रेटर नंबर है. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन हमें. ओके, now -12 plus -21, that is the addition of two negative integer. Okay, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अगर एडिशन है दोनों सेम नंबर सेम साइन वाले इंटीजर्स की तो उनको एडिशन करना है और जो भी साइन है वो आपको कॉमन लिख देना है. ओके, सो 21 प्लस दिस 12. ओके, सो 2 plus 3, 2 plus 1 3 and sign, so common sign is -33. So this is your left hand side -33, a plus b, okay, bracket plus c is equal to, now use the value. So here we are using a is -12 plus b 4, so this is in first bracket, plus c is -25. Okay, solve this. First bracket -12 plus 4, again it is addition of two integer which is a positive integer and negative integer. So what we will do, so take a difference
and write a sign of greater integer. Okay, so 12 minus 4, it is a minus 8. Okay, because this minus sign for 12. Okay, plus in bracket this c, that is minus 25 as it is. Okay, again here addition of two negative integer. Okay, sign is same for integer. In this case you have to add and write the same sign. Okay, 25 plus 8, it is 33 sign, so it is a minus 33. Therefore left hand side your a plus bracket b plus c is equal to a plus b bracket and plus c is satisfying. Okay, hence it is approved. Okay, question number 2, third, b and c are closed under subtraction. Okay, that is you have to show this b minus c subtraction is giving integer. Okay, integer. Therefore, so b value is minus 12 minus c is minus 25. Okay, solve करना है हमें. Okay, so here subtraction of two negative number. Okay, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये माइनस 12 तो वैसे रहेगा, लेकिन ये माइनस दैट इज अ सब्सट्रैक्शन माइनस नंबर इंटीजर का, तो ये क्या होता है, माइनस माइनस गिव्स प्लस साइन. ओके, सो देयरफॉर हियर माइनस 12 and this become plus 25. Okay, is equal to, so this is again addition of different sign, that is a negative integer and positive. So take a simply difference, दोनों का difference लेना है, you will get 13 and sign will be a larger greater number 13. तो आपका आंसर आएगा it is 13. Okay, so this is giving integer, 13 is a integer, therefore this is satisfying the closure property. So b and c are close under subtraction. और एक मेथड देखेंगे ये सॉल्व करने के, माइनस 12 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 25. ओके, सो यहाँ पे दिस इज नेगेटिव सब्सट्रैक्शन. ओके, सो वी राइट हियर माइनस 12, इसको अपोजिट करेंगे तो एडिशन होगा. यस, सो इट इज अ इनवर्स ऑफ एडिशन ऑफ दैट इनवर्स नंबर. मतलब यहाँ पे इसका अगर एडिशन करेंगे तो अपोजिट हो गया, तो इसका अपोजिट नंबर इनवर्स नंबर लेना है. तो माइनस 25 का इनवर्स नंबर क्या है, 25, तो डायरेक्टली 25 आएगा. ओके, सो वी कैन राइट माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे ये करके भी देखेंगे कि एडिशन करना है तो इसके अपोजिट नंबर का, यस, इनवर्स नंबर का अपोजिट. क्वेश्चन 2, 4 नंबर, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, आपको बताना है ये है या इट इज नॉट इक्वल. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड commutative property. Yes, so this is called left hand side and this is right hand side. Okay, so first solve a minus b is equal to, what is the value of a, minus 12 minus b is 4. Okay, so solve it, minus 12 minus 4. Okay, minus 12 minus 4, just simply add them and write common sign. Okay, so here minus 12 minus 4 is the 16 and minus. Okay, now right hand side b minus c is equal to, so what is b, your b is, sorry, this is b minus a, b is 4 minus a is minus 12. Okay, is equal to, so यहाँ पे माइनस माइनस इंटीजर है, तो माइनस माइनस इंटीजर इज नथिंग बट एडिशन. सो 4 इट बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस 12 इज इक्वल टू, इट इज अ 16. ओके, सो हियर देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 16, a minus b is equal to 16, this is minus. Okay, therefore a plus b okay, here a minus b is equal to minus 16, b minus a is equal to plus 16, therefore a minus b is not equal to b minus a. So here in subtraction this commutative property is not following. Yes, so a minus b is not equal to b minus
A. Okay, question 3. Fill in the blanks and write the name of property used in each case. Okay, so first case, A minus 60 plus 40. Okay, so middle sign, look at the middle sign, this is a plus, means it is an addition. Okay, and it is, let us say it is A integer plus B integer. Okay, so we can use here commutative property. Okay, so here we can write 40 plus in bracket minus 60, yes, is equal to, okay, and solve it. Okay, so it is a 40 plus minus 60, तो addition of two opposite integer sign up, तो यहाँ पे आपको सिंपली डिफरेंस लेना है और साइन देना है बड़े इंटीजर्स की, या जो वैल्यू बड़ा है वो. ओके, सो हियर इट इज अ 20, 60 माइनस 40 20 और साइन आएगा minus 20. So this is a commutative property. Okay, first case. Second case, here minus 35 plus 45, this again A plus B. Okay, A plus B. So A plus B is equal to B plus A. So again it is a commutative property. We can write here 45 plus A is minus 35. Solve it. Okay, so 35 minus 45 minus 35, take a difference, that is a 10, and sign of will be a this 45. Okay, plus sign. Then the middle sign is subtraction. Okay, so this is A minus B, so it is following this commutative property? No, it is not following commutative property. Okay, we can write here commutative property. So this is not following any property A minus B is equal to B minus A. Just simply write its value. Okay, minus 30 minus 20 minus 35, simply they are going to add. So here it is a 55. Okay, and this sign will be a minus. Okay, so here, okay, so we will solve. Okay, simply this is minus 20 and here minus 35. Yes, so we can write minus 20 and we are going to add. Okay, subtraction opposite एडिशन. ओके, सब्सट्रैक्शन के अपोजिट क्या है? एडिशन. तो यहाँ अगर माइनस साइन है तो हम प्लस करेंगे, तो ये जो 35 है इसका इनवर्स लेना है. 35 का इनवर्स, यस, इट इज माइनस 35. ओके, नाउ इट इज एडिशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, ये दो नेगेटिव इंटीजर का एडिशन है. सो देयरफॉर 35 प्लस 20 इज माइनस 55. दैट इज वी कैन सॉल्व. Okay, next minus 18 plus 50, so addition sign, so it follows this commutative property. So we can write 50 plus a integer is minus 18. Okay, so directly you will get 50 minus 18. Yes, 50 minus 18, it is giving 232. Okay, and sign will be a positive integer. Okay, then here this is A minus B. Okay, so it is not following commutative increment. Okay, okay, so this A minus B, it's not following B minus A. So simply just take a difference, that is minus 20 minus 36. So in this case you have to write this addition. So 36 plus 20, it is 56 and you will get minus sign. Okay, जब भी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो केयरफुली करना है आपको. ओके, देन अगेन हियर द साइन इज minus, that is subtraction. Okay, and this is not following this commutative property, just simply it is a minus B, it is called closure property. Okay, it is a closure property, it is also closure property. Okay, closure, this is closure property. Okay, so
38 minus 70, so subtraction. So it definitely not follow this commutative or associative property. It is only closure property. Okay, so 38 minus 70, so take a difference. Okay, difference लेना है दोनों का, और we can write this 38 plus माइनस का हमने प्लस कर दिया, अपोजिट कर दिया, सब्सट्रैक्शन का एडिशन कर दिया, तो जो 70 है उसको क्या करना है, इनवर्स लिखेंगे, इनवर्स दैट इज अ -70. ओके, एंड नाउ यू कैन ऐड दिस, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. इस सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज अ 70 माइनस 38 करना है, एंड साइन विल बी वहाँ डिसाइड करेंगे. ओके, सो हियर 0 - 8, तो 0 - 8 नहीं होता है, बोरो करना पड़ेगा. दिस इज 6 और ये 10. 10 minus 8 it is 2. 6 minus 3 it is a 3. Okay, so here 32 and sign will be of this -70. Okay, so -70 जो इंटीजर है उसका साइन, या फिर 38 छोटा है, -70 ये बड़ा नंबर है. ओके, 70 बड़ा नंबर है, दोनों का सब्सट्रैक्शन है, तो साइन विल बी अ नेगेटिव. ओके, सो -32.